अस्सलाम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, आप सबको एआरडी के स्पेशल शो में खुशामदीद। एशिया का सेकंड टेस्ट होने जा रहा है 28 जून से। पाकिस्तान में एक तरह से चांद रात होगी और आगे यानी ईद के दिनों में पाकिस्तान फैंस देख सकेंगे एशिया का सेकंड टेस्ट। पहले टेस्ट में बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ाती हुआ उसके बाद जो ऑफ द फील्ड चल रही है स्लेजिंग हाइप बन चुकी है। सो व्हाट वी गोना डू टुडे इज 5 factors which could decide second Ashes Test match. Specifically second Ashes Test की बात करें, of course उसमें पहला टेस्ट मैच भी काउंट इन होगा जब हम एनालाइज करेंगे। So for all that purpose, my twin brother Ali is with you. Ali, welcome to the show. Hope you are doing good. Yeah, thank you, Ahmed. I am doing very good. Our stakes are very, very high, and Lords is fitting ground to host the second match of this enthralling series. Looking forward to it. जब pretty much. So yeah, viewers आप टॉकिंग पॉइंट जानने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे होंगे। हम 3 चीज़ों के लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे आपकी तरफ से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चेक करना नहीं भूलेगा। सॉली, लेट्स गेट टुवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। टॉकिंग पॉइंट नंबर 1, आई थिंक लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड और जैसे पिच लाइक पिक्चर में नजर आ रही है, दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस पॉइंट अली? बिल्कुल अहमद, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, स्पेशली जिस तरह फुटबॉल में होता है टू बिग राइवल्स कम अप अगेंस्ट ईच अदर। सो उसमें जो उन दोनों के रिसेंट मैचेस होते हैं तो वो एक तरह से माइंड के ऊपर प्ले कर रहते हैं। और आजीज का लॉर्ड्स के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त record है। They have played 39 games at Lords and they have won 17 out of them. So it is their 17, they have won 17, have drawn 7. So it is one of their most favorite hunting ground। और इनका इंग्लैंड के खिलाफ 1934 से लेकर 2009 तक ये लॉर्ड्स पे इंग्लैंड के खिलाफ अनबीटन रहे हैं। 2005 की फेमस एशिया सीरीज में भी इन्होंने इंग्लैंड को उस सीरीज में हराया था। 2019 में भी हरा चुके हैं। सो they have a good history of it. They are coming into this match with good confidence. So both these factors combined do give Australia a slight edge over England. जाली और फ्लिप साइड इंग्लैंड के देखें तो 2014 से ऑनवर्ड्स लाइक मॉडर्न क्रिकेट आप कुछ इन्वॉल्व कर सकते हो। 17 टेस्ट मैच खेले हैं लॉर्ड्स पे, जिनमें से ओनली 7 दे हैव वन। इंडिया हरा चुकी है, पाकिस्तान हरा चुकी है, न्यूजीलैंड ने दो ड्रास किए और साउथ अफ्रीका के साथ क्लोज मैच हुआ इवन दो इंग्लैंड डिड वन इट। सो Yeah. they have pretty weak record, I would say. So yeah, that would be important, and of course, pitch जैसे नजर आ रही है, that is looking something spicy. अली, दूसरा मैचअप या दूसरा पॉइंट जो दूसरा फैक्टर जो डिसाइड कर सकता है सेकंड एशेज टेस्ट, उसकी तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। या अहमद, आई थिंक अगेन जिस तरह हमने लास्ट और जिसमें हमने बेसबॉल वर्सेस कमेंस बॉल के ऊपर डिस्कस किया था, बेसबॉल का अगेन आई थिंक ये इनको बहुत ज्यादा लुक अराउंड करना पड़ेगा ये फैक्टर, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे बैट क्विकली। सो ये ज्यादा से ज्यादा 70 से 75 ओवर खेलते हैं, उसमें 400 लगा के तो डिक्लेयर कर देते हैं। फिर द अपोनेंट्स टीम दे आर ऑलवेज ट्रेडिशनल साइड, सो वो आराम से लंबी बारी लेते हैं, 120 ओवर खेलते हैं। सो देयर बॉलर्स आर ऑलवेज अंडर अ टफ टास्क कि वो इनको हर दफा आउट करके दें। I maintain that they have been successful to get the teams all out, लेकिन still it is adding extra workload and especially पहली इनिंग्स में तो चलो सही हो जाता है, आप 5 दिन के बाद रेस्ट लेके आ रहे थे, लेकिन इन बिटवीन द इनिंग्स आप फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने जिस तरह पहले मैच में किया है, पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद खाजा ने कहा चल भाई तेरा, ऑस्ट्रेलिया ने लंबी बारी ली इंग्लैंड को। आल दो उस मैच में इन बिटवीन द इनिंग्स जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स खत्म हुई तो उसके बाद उनको रेस्ट मिल गया था ड्यू टू रेन, लेकिन इन बिटवीन द इनिंग्स जब इंग्लैंड मतलब फॉर एग्जांपल अपनी दूसरी इनिंग्स खेलने आते हैं मैच में,
सो वो दोबारा अगेन क्विक स्कोर पे जाते हैं, 60 ओवर खेलते हैं। सो इन बिटवीन द इनिंग्स जो उनके बॉलर्स हैं जो ऑलरेडी 120-30 ओवर कर चुके होते हैं, सो उन्हें वो रिकवरी टाइम नहीं मिलता। और इंग्लैंड के बॉलर्स के आप कोर देख लें, स्टुअर्ट हम्म, ब्रॉड, एंडरसन बोथ क्लोजिंग, एंडरसन 40 फॉर सर्टेन, ब्रॉड क्लोजिंग इन ऑन 40। सो उनको रिकवरी टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है जो उन्हें नहीं मिल रहा। आई नो दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड, but that workload for the last since the baseball has came in, that workload is certainly pushing them, and that was the one factor. हम्म, Anderson was totally gassed out, और आपने लास्ट मैच में स्टेटमेंट भी आई उसकी। एक तो पिच उन्होंने मतलब कि डेड रबर बनाई एक तरह से फॉर इंग्लैंड स्टैंडर्ड्स, और स्ट्रोक्स ने उसको आखिरी जब 70 रन रह गए थे और 2 विकेटें चाहिए थी, स्ट्रोक्स ने एंडरसन को एक भी ओवर नहीं दिया। सो एंडरसन वाज टोटली गैस्ड आउट, एंड आई थिंक इट इज मोर डाउन टू द वे दे आर प्लेइंग, बिकॉज इनकी बैटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सो इनको इन बिटवीन द इनिंग्स इनके बॉलर्स जो अब बहुत ओल्डीज हो चुके हैं उनको रिकवरी टाइम नहीं मिलता, एंड आई थिंक दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर इन दिस मैच एज वेल। जाली परफेक्टली पॉइंटेड। और जेम्स एंडरसन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार किया। ऑफ कोर्स वो पिच की तरफ उसने या फ्रस्ट्रेशन एंगल कर दी, बट वी नो या व्हाट ही या वांटेड टू से रिगार्डिंग या दिस क्विक टर्न अराउंड। फेयर पॉइंट। अली, तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स इंजरी कंसर्न्स चल रहे हैं, उसे हम लिंक कर देते हैं क्योंकि बेन स्टोक्स और मोइन अली को एज री इन्फोर्सर्स ही वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि बॉलर्स जो उनके मेन बॉलर्स हैं उनको कुछ 25 मिनट्स का ब्रेथर दे के वो चाहे आउट ना भी दें एक साइड से जस्ट कंट्रोल कर लेंगे। सॉरी, व्हाट डू यू हैव टू से, और किस तरह ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है सेकंड एशेज मैच पे? बिल्कुल अहमद, ये इम्पैक्ट करेगी। फर्स्ट मैच में तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर गए थे। मोइन अली वाज इंजर्ड, सो उसने दो दूसरे इनिंग्स में ट्राई किया, उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी लेकिन उसको साथ चौके पे लगे जा रहे थे। सो दैट पैटर्न ऑफ द प्ले रियली इन द लास्ट इनिंग्स ऑफ द मैच रियली स्विच्ड टू ऑस्ट्रेलिया फेवर। जहां वो बिल्कुल फंसे हुए थे वहां मोइन अली को कैरी ने कुछ आधी बाउंड्रीज निकाली थी, और इवन एट द एंड भी कमिंस ने बिल्कुल ऊपर से निकाले थे, इवन रूट का भी। सो आई थिंक इंग्लैंड आर फिटनेस वाइज नॉट गुड। स्ट्रोक्स जितना मर्जी माइंड गेम्स खेलते रहे कि मेरी नी बिल्कुल फिट है, ही इजंट फिट, ही इज नॉट फिट एट ऑल। आई थिंक उसको उसकी जो सेटिंग जूजो है वो उसे विकेट्स दिला देती है। ख्वाजा को लूसनर पे उसने आउट कर दिया था when it looked that England would go on to win the match. लेकिन I think स्ट्रोक्स और अब टेलीग्राफ इनका फेमस न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, ऑफ कोर्स उन्होंने रिपोर्ट किया कि मोइन अली हैज जस्ट रिकवर्ड टू बी जस्ट फिट इनफ टू स्टार्ट द गेम। सो देयर इंटेंशंस आर दे आर again going to be going with Moeen Ali, and they are not going to pick Ryan Ahmed. So I think playing with two half fit players, this is a big risk, even though Stokes has favoritism to Moeen Ali, considering the text he sent to him. Ashes question mark. Moeen Ali replies low, but I think they are doing lows to themselves. और इसका बड़ा फैक्टर यह था कि जब एंडरसन ब्रॉड इतनी बड़ी जान लगा के पहला ओवर पहले से पहले अपना कंप्लीट कराते हैं, उन्होंने उसमें अच्छा प्रेशर मेंटेन करते हैं। एज सुन एज दे हैव टू रीइंफोर्स, then the problem begins, and then the shackles come off, and because स्मिथ और लेबुस्चैन के पहले मैच में दोनों इनिंग्स में स्कोर नहीं हुआ, so they are bound, at least one of them is bound to get the score this time, and I don't think, again, it is a big factor if they go with Moeen Ali, and Stokes will of course play. So fitness is a big factor for England. जाली और बेसबॉल के मैं जो थोड़ी कंसर्न देखता हूँ ना, स्पेशली अभी जो वर्जन चल रहा है, जस्ट इमेजिन वार्नर किसी दिन एक्सप्लोड हो जाए एंडरसन और ब्रॉड के खिलाफ, एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट द रीइंफोर्सर्स, दे वुड बी इन ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स। ऑफ कोर्स अभी तक वो एक्सपोज नहीं हुए, उनके अर्ली ऑन जेम्स एंडरसन एंड ब्रॉड आर ऑल टुगेदर सुप्रीम बॉलर्स, बट हमेशा रिवर्स साइड भी बंदे को देखनी होती है। इमेजिन वार्नर किसी दिन एक्सप्लोड हो गया, आई want to see it happening. How England react to that would be an interesting case study as well.
सो याली इंग्लैंड पे थोड़ी ज़्यादा बात हो चुकी है अभी तक। लेट्स टर्न द स्पेक्ट्रम। ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। मेजर उनका जो सिलेक्शन कनंड्रम बन रहा है दैट इज अराउंड बोलैंड वर्सेस स्टार्क्स वाली। क्विकली व्हाट इज योर टेक, हु वुड बी योर पिक? या मैं इंग्लैंड ने ऑफ कोर्स दे प्ले एग्रेसिवली, लेकिन उन्होंने पूरा टारगेट किया हुआ था पोलैंड को, अच्छा खासा पॉइंट है हमारे दोनों नीड्स में। लेकिन आई थिंक वन ऑफ दोस मैचेस शुडंट बी शुडंट पैनिक ऑस्ट्रेलिया के वो पोलैंड को ड्रॉप कर दें आफ्टर द परफॉर्मेंसेस ही हैज पुट ओवर ऑलमोस्ट 18 months नाउ। आई थिंक पोलैंड शुड स्टार्ट स्टार का रेड बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, ऑल्दो इन वाइट बॉल ही हैज गुड रिकॉर्ड स्पेशली एट लॉर्ड्स। 2019 में स्ट्रोक्स के खिलाफ जाकर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डिलीवरीज इन द मॉडर्न क्रिकेट वर्ल्ड कप। वो भी आई थिंक, हाँ वो भी मैच लॉर्ड्स के ऊपर ही हो रहा था। हाँ सो आई लॉर्ड्स। थिंक so I think Boland should still start. I think he has that kind of variability in himself because Cummins और हेजलवुड तो पूरा ही प्रिडिक्टेबल है, उसने एक तरह से मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोर। लेकिन बोलैंड के पास आई थिंक वैरायटी ज्यादा है, वो आई थिंक स्लोअर वन करा के भी फंसा सकता है, एंड ही हैज दैट काइंड ऑफ निप इन हिमसेल्फ एज वेल कि वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट कर सके। सो आई थिंक बोलैंड शुड स्टिल start, or I think knowing Aussies, and I don't think they will really panic on just one of those matches के Boland को ड्रॉप करके स्टार को लें। So I think from my perspective, Boland should still start. Jolly, and they have proven it with Usman Khwaja as well. WTC फाइनल में वो फेल Yeah, हुआ और yeah, इंग्लैंड में पिछले 2 दफा वो जाके लाइक ड्रॉप yeah. आउट हो गया था, जब एलिमिनेट हो गया था स्क्वाड से। दे हैव प्रूवन इट। ऑल्दो वेरी शॉर्ट कमेंट ऑन स्टार्क, डब्ल्यूटीसी फाइनल में मुझे जिस तरह उसे मैनेज किया गया आई वाजंट हैप्पी विद बैट्समैन, बट एनीवे वी मूव ऑन। अली लास्ट पॉइंट, लास्ट फैक्टर्स व्हिच कुड decide the second Ashes Test match. Ali, you want to see Mark Wood being inducted into the England lineup? Why so? अहमद आई थिंक एंडरसन और ब्रॉड, एंडरसन का पेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अगेन ही गोज फॉर एक्यूरेसी, अगर उसे ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाए ही इज स्टिल एन अनबिलीवेबल बॉलर। ब्रॉड ने पूरी जान लगाई पहली इनिंग्स में, दूसरी में भी लगाई, बट ही स्टिल गेट्स गैस्ड आउट, एंड आई थिंक ही इज इवन इन हिज बेस्ट प्राइम डेज उसकी मैक्सिमम एवरेज से पेट क्या 135 होती है, लेकिन मैक्सिमम 142 से 43 तक जाता है। लेकिन आई थिंक इफ इंग्लैंड गो विद द सेम पिच जहां वो मतलब ज्यादा मूविंग कंडीशंस ना बनाए, कंसीडरिंग देयर बैट्समैन their lack of technical expertise, which I mentioned last time out. So if they prepare similar kind of pitch जहाँ मतलब ज्यादा मूवमेंट ना हो, वहां पे आई थिंक इंग्लैंड को वुड की तरफ जाना पड़ेगा। दे नीड दैट एक्स फैक्टर इन देयर बॉलिंग के, उनके पास एक्स्ट्रा पेस हो, बर्स्ट मारे, तीन चार ओवरों के बर्स्ट मारे। आई थिंक पाकिस्तान में जिस तरह डेड पिचेस थी, आई थिंक वुड वाज देयर मेन मैन जिसने उनको बहुत अहम विकेटें लेके दी। सो ही कैन बाउंस देम आउट एज वेल। वो जिस तरह अम्ब्रेला फील्ड बेन स्टोक्स सेट करता है, I think he will be a perfect change up after Anderson and Broad as compared to Ole Robinson. और Ole Robinson का वो इशू भी चल रहा है, and if Ole Robinson plays, Aziz will give him a proper music this time around. So I think Ollie Robinson का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। और and I even with more than that, I don't think both of Anderson and Broad can sustain to play all of those 5 matches. So they will have to rotate between those as well. But for this match, go with Anderson Broad, drop Oliver Robertson, उसका जरा दिमाग ठंडा करें, give Wood the pace, और वुड बिकॉज लॉर्ड्स के स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करना। लॉर्ड्स वी नो स्लोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, एंड आई थिंक विद दैट पेस वुड इज गोइंग टू बी अ डेमन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो ये मेरे लिए एक कंसिडरेबल फैक्टर है इफ इंग्लैंड आर टू विन द मैच। या वोक्स के भी वैसे काफी अच्छे स्टैट्स थे, इवन लॉर्ड्स पे भी, और इवन जो यंगेस्ट लॉट है उसमें भी। बट अगेन फॉर दिस वेरी मैच आई डू एडवोकेट फॉर मार्क वुड। क्रिस वोक्स को अगले ग्राउंड बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। So yeah, viewers, these were the 5 points which could decide the second Ashes Test match. Hope you like the video.
ऑन योर वे आउट ऑफ द स्टीम, लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेगा। जीते हैं सलामत हैं, अल्लाह हाफिज।